बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. And I will share my passion with you people through the course of my lectures. Today we are going to start off our discussion with the subsection of basic concepts of cell biology. Well, I am a big picture guy, and whenever I go to the classrooms even, I have got a tendency to give the big picture to my students. I always like to give the big picture and then I try to build up the finer details into that big picture. It helps me to organize the information in the brains of the students, because I personally think that organization of the information specifically for the subject of biology is very, very important. So here is our today's big picture. First of all, we will discuss cells as basic structural and functional units of living things. सबसे पहले हम cells को living things के basic structural और functional units के तौर पर discuss करेंगे. And secondly, we'll discuss about the big picture of structure of a eukaryotic cell. एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की मैं आपको बिग पिक्चर दूंगा, एंड आने वाले सब सेक्शंस में हम उस बिग पिक्चर की फर्दर डिटेल्स में जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द सेल्स एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स. So you can see here cells are the basic structural units of the living things. So पहली बात यहाँ पे क्या आई है? They are basic structural units. Well students, you know that bacteria are the simplest living things and human beings are most complex living things. Simplest living things से लेके most complex living things तक जितने भी ये organisms हैं, उन सब का जो basic structure है वो cells से बना है. अगर कोई भी entity ऐसी है जिसका structure cellular नहीं है, जो कि सेल्स या सेल्स की प्रोडक्ट्स से नहीं बना हुआ, तो हम उसको लिविंग लेबल ही नहीं करते. इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल वायरसेस हैं. सो वी डोंट लेबल वायरसेस एज द लिविंग थिंग्स. व्हाई सो? बिकॉज वायरसेस के पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है. सो पहला पॉइंट कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. एंड दूसरा पॉइंट है हमारे पास, सेल्स आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. सेल्स तमाम लिविंग थिंग्स का फंक्शनल यूनिट भी हैं, यानी कि बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स तक ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हर वो सिंगल फंक्शन जो कि वो परफॉर्म करते हैं या परफॉर्म करने की सलाहियत भी रखते हैं, एवरी सिंगल फंक्शन कैन अल्टीमेटली बी एट्रीब्यूटेड टू सेल. Like if I have walked into this room and I'm delivering this lecture to you, even every single function you can observe right now, it can ultimately be attributed to cell. Once a student in the classroom asked a question from me, "Sir, how would you attribute thinking to cells?" Thinking is also a function. It's a function of brain. So अब thinking को किस तरह से cells की तरफ लेके जाएंगे कि